नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री, जिलों के प्रभारी और मंत्री और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उपचुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ और रणनीतियां तैयार की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 9 सीटों पर उपचुनाव को जीतने के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की। साथ ही आपको बता दें कि बैठक के दौरान मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव जीतना केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत होगी, इसलिए हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन को मजबूत के साथ में संभालने के निर्देश दिए और इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही समेत राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री और प्रभारी मंत्री समेत बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्यूमर डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों में घायल लोगों की मदद के लिए जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष वर्ल्ड ट्रॉमा डे के अवसर पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस और यथार्थ अस्पताल के संयुक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 में जीवन रक्षा पर संवेदनशीलता और पुलिस डॉक्टर की सामाजिक भूमिका पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उनके द्वारा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित किया गया कि जीवन रक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें पुलिस और डॉक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों में घायल लोगों की जान बचाने के लिए त्वरित और सही कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। उधर पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस बल के साथ थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आगामी त्योहारों के दृष्टिगत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों और व्यक्तियों की सघनता पूर्वक चेकिंग की जाए, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाए एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। त्योहारों को लेकर भारी पुलिस बल के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। एडीसीपी अशोक कुमार और एसपी अमित कुमार जारशा थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। उधर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को लेकर डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी की तरफ से एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदय कठेरिया के साथ पुलिस कार्यालय सभागार में व्यापारी बंधुओं के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। उनकी तरफ से मीटिंग में उपस्थित सभी व्यापारियों की समस्या को सुना गया और उनको हर संभव समाधान का आश्वासन दिया गया। उनकी तरफ से आगामी त्योहारों को लेकर व्यापारी बंधुओं के साथ विचार विमर्श करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
उधर 14 नवंबर को थाना दादरी के क्षेत्रांतर्गत दादरी बाईपास पर लॉजिस्टिक पार्क से बिसाहड़ा अंडरपास के पास अज्ञात महिला का शव पड़े होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस सहित वरिष्ठ अधिकारीगण की तरफ से मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया था। अभियुक्त के कब्जे से डीलक्स मोटरसाइकिल निशादेही पर कोट नहर पुल के पास से घटना में प्रयुक्त आलाकत्र पत्थर बरामद किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर धारा 103 धारा बीएनएस का भी लोप किया गया है। अवगत कराना है कि थाना दादरी के बिसाड़ा बाईपास पर जो एक अज्ञात महिला का शव मिला था, उसके संबंध में थाना दादरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज उसकी पहचान उसकी मां के द्वारा की गई थी और उसकी मां ने ये बताया कि उसके चाल चलन और व्यवहार से आगे जाकर के उसके पिता द्वारा ही उसकी हत्या की गई है और सबको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया था। तत्काल इसमें अभियोग को 103(1) बीएनएस में परिवर्तित करके मृतका की मां और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसके पिता रामकिशोर पुत्र प्रकाश निवासी भोगरा, जो कि अमरोहा का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा एक बजरीनुमा पत्थर को भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष साक्ष्य संकलन शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। उधर थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूटी चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर प्रयोग करने वाला एक अभियुक्त तनुज को सेक्टर 26 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट और चोरी की गई एक स्कूटी मैस्ट्रो रंग काला बरामद हुई है। बता दें कि अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि ये स्कूटी उसने फरवरी में निठारी से चोरी की थी और इसकी नंबर प्लेट निकालकर नंबर प्लेट लगा दी। उधर थाना कासना पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये अभियुक्त लूट की योजना बना रहे थे। अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो 3 शातिर अभियुक्तों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर से खबर, जहां पर लूट की योजना बना रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध हथियार और बाइक इनसे बरामद हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मलावी की यात्रा पर अधिकारियों की तरफ से विशेष ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। On the visit of the Honorable President of India to Malawi. As you all know, the Honorable President of India embarked on a state visit to 3 countries on 13th October 2024 from India. I have already briefed you on her visit to Algeria from 13th to 15th October and to Mauritania on 16th October. She is now on the final leg of her state visit, and that is to Malawi. The President of India arrived in Malawi on the morning of 17th October from Mauritania. This is a historic visit, as it is the first ever visit by the President of India to Malawi in the last 60 years since the establishment of diplomatic relations between the 2 countries. Upon her arrival in Lilongwe yesterday, as a special gesture, Vice President of Malawi, His Excellency Mr. Michael Biswick-Usi, received the Honorable President at the airport, where she was accorded a ceremonial guard of honor
by the Malawi Defense Forces. There was a 21-gun salute in her honor. The Vice President thereafter introduced Honorable President to several members of the Malawi Cabinet of Ministers and other senior dignitaries. Friends, coming to the background of this visit, India was one of the first countries to establish diplomatic relations with Malawi soon after the country's independence in 1964. India and Malawi share a cordial and friendly relationship reinforced by strong people-to-people ties which span over 140 years. Malawi remains one of our special partners in Africa, and India has strong development partnership with Malawi. It is in this context that the visit of the Honorable President assumes great significance. Coincidentally, this year also marks the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries. I must add here that our people-to-people ties predate our official relations and go back over a century. Now coming to the engagements of the Honorable President began in the morning of 17th October with the India-Malawi Business Roundtable, where she delivered the keynote address. Minister of Trade and Industry of Malawi, His Excellency Mr. Sosten Alfred Gwenge, also attended this business roundtable, which was organized by the Confederation of Indian Industries. There were several other ministers from the Malawian government present at this forum. Over 60 companies from both India and Malawi participated at this event. In her keynote address, the Honorable President of India observed that there was immense scope for enhancing cooperation between India and Malawi in several fields, including agriculture, mining, energy, and tourism. She expressed the belief that this roundtable would prove to be an important milestone in developing trade and economic cooperation between the two countries. The forum is continuing even today. Later in the evening of 17 October, a community interaction was held where the Honorable President of India addressed the community members of Indian origin and Indian nationals who are living in Malawi. The Indian diaspora in Malawi is estimated to be nearly 15,000. Our friendly bilateral relations are reinforced by the strong people-to-people ties. In her address, the Honorable President appreciated the contribution of the Indian diaspora to the growth and development of Malawi and described them as an important bridge between the two countries. She urged them to take part in the development journey of India. The engagements of the Honorable President of India began today morning by laying of a wreath at the National War Memorial in Lilongwe, which also commemorates the fallen Indian soldiers during the two world wars. Thereafter, she visited and paid tributes at the mausoleum of former President of Malawi, Dr. Kamuzu Banda. Honorable President thereafter held official talks with President of Malawi, His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, at the State House. There was a tete-a-tete between the two leaders, followed by delegation-level talks. The meetings were extremely warm and friendly. During the meeting, both leaders discussed a wide range of issues on the bilateral cooperation between India and Malawi. Both sides reaffirmed their mutual trust and strong commitment towards enhancing the bilateral partnership for progress and prosperity of the people of both the countries. Both leaders agreed to enhance cooperation in the areas of capacity building, economic engagement, development partnership, and people-to-people exchanges. Following the bilateral talks, both the leaders
witnessed the signing and exchanging of 4 memorandums of understanding in the fields of art and culture, cooperation on youth matters, sports cooperation, and pharmacopoeial cooperation. I would just like to give you a little bit of idea about each of the MOUs that were signed. The MOU on sports cooperation will provide for a framework to strengthen and encourage cooperation between India and Malawi on sports matters through events and activities organized by both countries on the basis of reciprocity and mutual benefit. The MOU on cooperation on youth matters between the two countries will focus on strengthening cooperation between India and Malawi in areas such as youth exchange programs, youth conferences, emerging youth issues, among others. The one on cooperation in the field of arts and culture will strengthen and deepen friendly cultural relations between both countries in the field of music, dance, theatre, art, archaeology, archives, library, and museum, to name a few. The one on pharmacopoeial cooperation will ensure better scope for development of generic medicines and availability of affordable medicines in Malawi. It will also enhance the ability of regulatory public health authorities of both the countries to meet the needs of their respective populations and provide opportunities for technical cooperation in areas which are of mutual benefit. Following the signing of these 4 MOUs, the two leaders also witnessed the symbolic handing over of 1,000 metric tons of rice and the Bhabatron cancer treating machine to Malawi. Both these are gifts as a goodwill gesture from India to Malawi. As a humanitarian initiative, the Honorable President of India also announced the setting up of a permanent artificial limb replacement center for the people of Malawi. The Honorable President of India invited President Dr. Chakwera to visit India, which was graciously accepted. The mutually convenient dates for the visit would be finalized through the normal diplomatic channels. Friends, the visit of the Honorable President of India is continuing, and later in the evening today, President Chakwera will be hosting a state banquet in honor of the Honorable President of India at the State House. Tomorrow, Honorable President of India will be visiting the Sri Radhakrishna Temple in Lilongwe, which was established more than 50 years ago. To boost the tourism potential of Malawi, she will also be visiting the Lake Malawi before her departure for India from Malawi. Before concluding, friends, I would like to mention that this first ever presidential visit to Malawi will add a new chapter in the history of bilateral relations of India and Malawi. It reinforces the long-standing friendship between India and Malawi and sets the stage for elevating our multifaceted partnership with Malawi to greater heights. Zikomo Kwamberi. When we are looking at, the trade and commercial relations between India, if I start from there, then I just mentioned that our trade relations is just not of today, but these are historic and they really go back to the 19th century, which coincided with the arrival of several Indian tradesmen, mainly from Gujarat and to the African subcontinent. Now, Malawi, being an LDC, is also the beneficiary under Government of India's duty-free tariff preference schemes, which were introduced in April 2008. We have removed the quota for import of pigeon peas from Malawi, and the bilateral trade between India and Malawi has also been growing
And as per the 21-22 data that I have, the bilateral trade stood at around 256 million US dollars, though we had expected that the COVID pandemic would push it down, but we are happy that the trade continued. India also happens to be one of the largest investors in Malawi, with over $500 million worth of investments. If I were to touch upon the current relationship that is there between India, as I mentioned in my briefing, that both our countries have very cordial and very, very friendly relationship. This is based on mutual respect, cooperation, and very strong people-to-people contacts. We were one of the first countries to establish diplomatic relationship with Malawi soon after this independence. And our contacts, as I mentioned, is not of today, but goes back almost 140 years. Our common faith in democratic values and pluralism makes India and Malawi mutual natural partners. And this partnership has been reinforced by regular visits and high-level contacts. India remains one of the major development partners of Malawi. Besides strong bilateral relationship, our countries also work closely in several multilateral fora on various issues of common interest. Our partnership for progress and prosperity is poised to further expand and deepen across diverse areas following this first historic visit of the Honorable President of India to Malawi.